हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्ट्रेस क्लासेस। आज हम 10th क्लास के लिए जो हमारा सेशन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का चल रहा है उसमें आगे चैप्टर 10 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑल चैप्टर हमने पूरे कर दिए हैं। इनमें चैप्टर वाइज हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड एग्जाम 2025 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, तो हमने वो सॉल्व किए हैं। आज चैप्टर 10 हो जाएगा शुरू। इसमें चैप्टर 10 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड एग्जाम एंड चैप्टर 10 इज टेंजेंट सर्कल। सर्कल इज देयर। इन सर्कल you know radius, chord, diameter of a circle. New point is tangent, and tangent point means touches the circle. Touches tangent. And this one mathematician is there. Okay, Danish mathematician है. Danish mathematician थॉमस फिनेके in 1583 में, ओके, दानिश का मैथमेटिशियन है, ओके, थॉमस फिनेके in 1583। इस ईयर में इन्होंने टेंजेंट को हमें मैथमेटिक्स में सर्कल के अंदर ऐसी लाइन जो कि सर्कल को टच करती है उसका नाम टेंजेंट रखा है इन्होंने। ओके, क्लियर? नाउ वन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, प्रूव दैट इन टू concentric circles, these two circles with the same center, concentric circle means same center, so then these two circle on the same center, okay, clear? Concentric circle, the chord of the larger circle, जो बड़ा सर्कल है उसकी कोड है AB। अब कैसी कोड? which touches the smaller circle, वो फिर टच करती है स्मॉलर सर्कल को, इस टाइप की कोड AB। तो लेट टचिंग एट द पॉइंट P, ओके, इज बाइसेक्टेड, प्रूव करना है कि ये बाइसेक्टेड है एट टचिंग पॉइंट P, यानी AP इक्वल टू PB। टू प्रूव, ये हमें इसमें प्रूव करना है कि दिस कोड AB is bisected at touching point to the smaller circle. So means we have to prove AP equal BP, bisected equal to part, ये हमें प्रूव करना है। ओके, प्रूव, इन द प्रूफ दिस AB कोड है बट स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट है। ओके, so one theorem is there, for the smaller circle center O, so this is the tangent. AB is tangent for a smaller circle because it is given the chord is touching to the smaller circle at point P. So P point is the contact point of this tangent. So means OP will be perpendicular on AB by the theorem. Radius perpendicular to tangent. So we have to use that, and we have to take here for the proof triangle APB, OPA and triangle OPB. So in triangle OAP and triangle OBP. In triangle, these are congruent. See there how congruent. Angle OPA equal angle OPB, क्यों इक्वल है? each 90 degree equal 90 degree. Why 90 degree? Reason, radius perpendicular to tangent. Radius, okay, perpendicular to tangent. We know theorem, okay, perpendicular to tangent. This. So now second point, OA equal to OB. Why?
radius of the larger circle. Okay, radii. Clear? Second point, this third OP equal to OP common. OP equal to OP common. Okay, it means both triangle. So this implies triangle OAP congruent triangle OBP. कौन से रूल से हो गई? 90 डिग्री राइट ट्रायंगल हो गई एंड हाइपोटेन्यूज हो गया रेडियस एंड अदर वन साइड, तो RHS कॉन्ग्रुएंसी. ओके, RHS रूल. ऑफ कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, देन दिस इंप्लाइज ओके बाय CPCT AP equal BP. CPCT corresponding part of congruent triangle. Done. Hence proved. Okay. To like this question, application I given here may be given AP 8, find AB is 8 is called, find the AP distance. Okay, then AB 8, then AP will be 4. Not asking proof, find that. So like this, many questions can be made like this in the board exam. You should be careful about this concept. Okay, now next. Yes, next question is prove that the tangents drawn at the ends of a diameter. Let AB is diameter of the circle with center O. Let AB is diameter of the center with circle O. Okay. At the ends means at point A and at point B, ends of the diameter, and at point A and at point B of the circle, tangents drawn. So tangent this x, y, x dash, y dash. That these two tangents drawn at the point A and B. Okay, given. These are tangents given. Prove that both are parallel, and prove that x, y parallel to x dash, y dash. Okay, given we can write let x, y is the tangent at B and x dash, y dash is the tangent at point A and AB is diameter given. Okay, AB is diameter given. We can write given also. Okay, in the short form in figure. Okay, figure also given. So in figure, what AB is diameter, AB is diameter. ठीक है, we should write this is given, and what is given? X, y, comma x dash, y dash are tangents, are tangents
R tangent at B and A respectively. Okay, beta. This we should write. This is given. Now in the proof, what you have to do? First, you can think one theorem we can use here, because radius perpendicular to tangent, O is center, OB radius, radius perpendicular to tangent, we can write angle OBX, angle OBX is equal to 90 degree. Why? Because radius perpendicular to tangent. Okay? Radius perpendicular to tangent. This region we can write. Okay? Because tangent given at the point B. Okay? And similarly, other tangent angle OAY dash, OAY dash also 90 degree, same region. Okay, radius perpendicular to tangent theorem. After that, you will write that BOA is a straight line, as BOA is a diameter okay given. So it is transversal, okay, transversal line, it is transversal line which intersect to the two line which intersect. This sentence we should write, which intersects to the two lines, two lines कौन सी, x y and two line x y and x dash y dash, two line, these two lines intersect in such a way, in such a way that alternate angles are equal, that alternate angles equal. इक्वल कहाँ होंगे, यहां से
implies angle X B O equal angle O A Y dash equal 90 degree. Equation 1 equal in equation 1 prove that okay. So x y line parallel to x dash y dash hence proved. So like this you should do use this theorem. This is also if a line transversal line intersects to the two lines in such a way that alternate interior angles are equal, then both lines are parallel. Done. Hence done. So like the next question. Yes. Next question. Question 3. In figure. This figure. What given? X, y and x dash y dash. X, y and x dash y dash. Two tangents, parallel tangents are there. Both are parallel given to a circle with center O. Okay? And another tangent AB also one another tangent at the point of contact C. This given intersecting xy and at A xy at A and x dash y at B. Prove that angle AOB 90 degree. AOB. This we have to prove. Given parallel tangent, you can write again here in the given. I explained. You can write xy parallel x dash y dash tangents. ठीक है? You can write all given things and then prove. Okay, in the proof, you should conjugate these two triangles, triangle APO and ACO. In triangle APO and ACO. In both triangles, what is there? Length of tangents. One theorem is there. Length of tangent from an external point to a circle are equal. So AP equal from external point. AP one tangent, other AC. Okay? Tangents. From an external point. Are equal. ठीक है, we know. So second point, 90 degree we can write angle APO, this angle, and angle ACO. Each angle 90 degree, radius perpendicular to tangent. Okay? You know radius perpendicular to tangent. Theorem. Okay. Now third point you can write. You see here hypotenuse you can write OA equal to OA. Common. So this implies triangle OAB
P A congruent triangle O C A by RHS 90 degree hypotenuse and one side. Okay, so this implies other all parts will be equal by CPCT. So let this angle is 1, this angle at 2, and similarly this angle at 3 and this angle at 4. These two mention, and then right angle 1 equal to angle 2 by CPCT, congruent corresponding part of congruent triangle. इक्वेशन नंबर 1 इसका यूज होगा आगे. Similarly you can prove triangle OCB, triangle OCB congruent triangle OQB. So this implies same rule, ठीक है. So this implies angle 4 is equal to angle 3 by CPCT. We can write now. After this, what you can do? Simple. What you can do? Co-interior angle sum. देखो ध्यान दो. As x y parallel x dash y dash. So this implies ये कोई इंटीरियर एंगल हो गया, ए बी ट्रांसवर्सल होगी, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री. को इंटीरियर एंगल, व्हाट इज रीजन? को इंटीरियर angles sum. Okay, we now get co-interior angle sum 180 degree. Clear? Now after that what you will do? Use equation 1 and 2. Okay, then you take instead 1 angle 2 plus angle 2, so twice angle 2, and instead angle 4 we can write 3, so twice angle 3 equal 180 degree. क्या यूज किया यहाँ पर हमने? यूज इक्वेशन 1, 2. जो इक्वेशन 1 एंड 2 है ये दोनों इक्वेशन यूज कर लिया यहाँ पर. डन. ओके, आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू? नाउ this twice common, then angle 2 plus angle 3 is equal to 90 degree. 2 से डिवाइड हो गया, ठीक है. डन. So this equation number 3, use this in triangle AOB, in triangle ABO. In triangle the sum of angles, angle AOB plus angle 2, एंगल A 2 है प्लस एंगल B 3 है, एंगल 3 is equal to 180 degree.
sum of the all angles in a triangle 180 degree. Sum of angle property. Sum of angles property in a triangle. Okay, we know. Then after that ये दोनों का सम यहां से 90 डिग्री पुट कर दो, तो then this implies angle AOB plus this 90 from equation 3, sum of angle 2 and angle 3 90 degree proved above in equation number 3. तो हिंट दे दो, यूज इक्वेशन 3. which equation यूज किया? 3. give hint here and then angle AOB equal 180 minus 90, then 90 degree. Done. Has proved. Okay, has proved. So like this we can do. Done. Now next question, one more question we can. Yes beta, next question is question 4. Prove that the parallelogram any ABCD is a parallelogram given. What given? ABCD is parallelogram. This parallelogram given. ठीक है. circumscribing a circle, यानी ये सर्कल के बाहर बना हुआ है, सर्कल के ऊपर बना हुआ है. circumscribe उसके ऊपर बनाया गया है, सर्कल के बाहर. circumscribe the circle, ठीक है, बाहर है. prove that it is a rhombus. ABCD. now here कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने? let ये जो कांटेक्ट पॉइंट है E, EF GH are touching point. TOUCHING टचिंग पॉइंट है, कांटेक्ट पॉइंट है, कांटेक्ट पॉइंट, टचिंग पॉइंट टू द सर्कल, टू द सर्कल. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो प्रूफ we have to prove it is rhombus. So how can do? Length of tangent from an external points to a circle are equal. Use that. So we can say AE equal AH. Okay beta, AE equal to AH, external point. Similarly from B, BE equal to BF. Understand? From B point, BE equal to BF. ओके, ये पॉइंट लिए. अब यहां इस साइड से CG इक्वल टू CF, CG इक्वल टू CF. ओके, C पॉइंट से. एंड DG, CG है तो DG इधर ही रखना है, ऐड हो जाएंगे. ठीक है, तो DG, D पॉइंट से DG इक्वल टू DH. दिस इज टेक्निक टू राइट विच पार्ट किधर लिखना है, यानी ऑपोजिट साइड बने ऐड करके. AB बने CD बने, तो AB
एंड सी डी बनेगी, ठीक है। तो अपने आप ही अदर पार्ट की दूसरी आ जाएगी, इस टाइप से लिखना है। रीजन इनका क्या है बेटा, रीजन फॉर ऑल क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle are equal, drawn from an external point, from an external point to a circle, to a circle are equal. This is one theorem है बेटा, ओके, वन थ्योरम। तो ये इसलिए इक्वल हो गई सर, एडिंग ऑल फोर इक्वेशन 1 2 3 and 4, adding these all four, adding equations 1 2 3 4 imply that a e plus b by figure a e plus b a b बन गई, ठीक है, सी जी प्लस डी जी सी जी प्लस डी जी सी डी बन गई। मैं डायरेक्ट ऐड करके लिख दिया फिगर से, इक्वल, एक लाइन अलग से लिख सकते हैं प्लस डालकर फिर इसको, ठीक है। अब राइट हैंड में देखो ए एच प्लस डी एच, ए एच प्लस डी एच मीन्स ए डी, एंड डी एफ प्लस सी एफ, डी एफ प्लस सी एफ डी सी, क्लियर। राइट हैंड में ऐड कर दिया, लेफ्ट हैंड। अब क्या करेंगे बेटा इसमें, बिकॉज इट इज पैरेललोग्राम गिवन ए बी सी डी, तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो व्हाट इज सी डी एंड ए बी आर इक्वल, तो सी डी को भी ए बी पुट कर दो मैं, ए बी प्लस ए बी, बिकॉज पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। एंड ए डी को बी सी पुट कर दूंगा, बी सी प्लस बी सी, ओके बेटा। Then this twice AB equal twice BC, तो 2 से 2 cancel, then adjacent sides are equal AB and BC of parallelogram, so this is rhombus, so AB CD is a rhombus. Why? Because adjacent equal, this implies we can say AB equal BC equal CD equal AD, चारों साइड इक्वल हो गई, hence it is rhombus, hence proved। ये important question, फिगर important, circumscribe a circle, सर्कल के ऊपर, okay, this word you should remember, okay। Like, share and subscribe the channel and send the video to the maximum contact and guide them, they must like, watch, share and subscribe the channel and send the feedback in the comment box, definitely, thank you।